Okay, so yesterday we started off with universal law of gravitation, which is also called as Newton's law of gravitation. So we'll see again what is Newton's law of gravitation, how did Newton derive that or come to a conclusion for that particular law, and we will see what is the force exerted by mass 1 on mass 2, and we will see that in vector form, and then we will go ahead and see what is the total force acting on one object due to n number of other objects. तो start हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, which is also known as Newton's law of gravitation. What is happening here? Okay, Newton's law of gravitation, right? तो कल मैंने आपको एक स्लाइट हिंट दिया था इसका, what is this Newton's law of gravitation and why it is called as universal law of gravitation, right? So to start off with, Newton studied the motion of moon around earth. तो हमको हमको भी पता है that motion of moon around earth is more or less circular. So moon revolves around earth in circular orbit, right? Then what we know is किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए we need, I mean, the object needs centripetal force. So centripetal force is given by F is equal to mr omega square, where this m is mass of moon, right? But in general, force is mass into acceleration, so mr omega square, cancel. So A is equal to R, and omega is angular frequency, which is 2 pi times of linear frequency, इसका स्क्वायर. linear frequency था हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी स्क्वायर, और हमको अर्थ और मून का डिस्टेंस आर ऑलरेडी पता है, 3,85,000 किलोमीटर्स, सो 3.85 into 10 power 5 kilometers roughly, right? So we also know what is time period of or moon's rotation revolution around earth. The moon revolves around earth in 27.3 days roughly, right? So you have to substitute all these values after converting it into SI units. So you should know this is 3.85 into 10 power 8 meter, and 27.3 days is 20.7.3 into 60, right? 24. हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. एक दिन में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स. तो आफ्टर यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ all these parameters, so 3.85 into 10 power 8, 2 pi by t square, मतलब 27.3 into 24 into 60 into 60, इसका स्क्वायर अगर आप कर लेते हो, तो in this case, after solving all this, you get acceleration of the moon around earth. I will denote it by am. This value turns out to be a very small value, which is 0.027 meter per second square. Correct? Right. ये बहुत small value है. Now if you compare this value with acceleration due to gravity of any object on the surface of earth, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे, by the way, on the surface of earth there is an object, the one in the red, okay?
एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सेंटर टू सेंटर, center of earth to center of mass of that object and center of earth to the center of moon, right? जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, ए ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसमें r की वैल्यू, सो r वैल्यू हियर विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, दैट इज अराउंड 6373 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट, राइट? हमको पता है दैट वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो acceleration of an object on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे था और एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, मून, उन दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हो, बट उन दोनों का एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आई। सो व्हाट न्यूटन डिड वाज, ही सेड ओके लेट्स कंपेयर। तो a object by a moon, he took ratio of it. So after taking ratio, the ratio turned out to be 3600. मतलब acceleration of an object is 3600 times more than acceleration of moon. तो ऐसा क्यों हुआ? To understand this, what Newton did was, what he did was he checked, he compared distances also. So also, what we know is distance of moon from earth upon distance of object on the surface of earth from the center of earth. जैसे आपको पता है distance of moon from earth center is 3.85 into 10 power 5 kilometers, and of object which is on the surface of earth, मतलब आप खुद, आपका भी distance earth के center से 6378 किलोमीटर के आसपास आता है। So both are in kilometers, so will be cancelled out. Right, so this is one thing that you should know, and this turns out to be 60. Okay, तो ये 60 मिल जाता है। इसका मतलब acceleration of object upon acceleration of moon is equal to 3600 था, that is equal to 60 square आ गया, so that is equal to nothing but distance of moon upon distance of object from the earth center का स्क्वायर, राइट? ऑल राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। गुड, सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन किया? सो हमने मतलब न्यूटन कंक्लूडेड दैट एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जा रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज m इंटू ए, तो फोर्स जो है दैट इज m इंटू ए, राइट? Therefore, what we can conclude is force is proportional to, gravitational force is proportional to m by r square, राइट? तो अगर मून पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, मतलब इफ अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून, तो मून भी करेगा, मून ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, so force exerted on earth due to moon is proportional to capital M r square, right? So in general, what we can say that force on earth due to moon and force on moon due to earth, they should be equal. So in general, we can say force of gravity between any two masses is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो ये बन गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इजी। तो हमने क्या किया, हमने अब तक सिर्फ स्टार्टिंग में बोला
कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, और सर्कुलर ऑर्बिट में अगर है तो देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ऑलरेडी मोशन इन 2 डायमेंशंस में, मोशन इन अ प्लेन में देखा है, दैट इट इज mr⍵². गुड, राइट. सो F is mr⍵², but F is m into a, so a is equal to r⍵². Omega is angular frequency, which is 2 pi times of linear frequency. So a is r 2 pi by t का square. हमको पता है अर्थ मून का डिस्टेंस, हमको पता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ. हमने वैल्यूज डाल दी तो हमको मिल गया एक्सीलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, दैट इज 0.027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, strictly in SI units. And what else do we know? हमको ये पता है कि अर्थ की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, द वन इन द रेड, हमने वो रेड से दिखाया है, अर्थ की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन इज 9.8. तो हमने ऑब्जेक्ट का और मून का एक्सेलरेशन कंपेयर कर दिया तो हमको मिल गया 3600 kilometer, 3600, this is not, it is dimensionless quantity. So we have the ratio of a object to a moon as 3600. But we also know that distance of moon from earth upon distance of object from earth center is 60. So from here we can say acceleration of object upon acceleration of moon is distance of moon upon distance of object का square. So in general, what we can conclude is a is proportional to 1 by r square, right? So if acceleration is proportional to 1 by r square, force should be proportional to mass by r square, because force is mass into acceleration, right? In general, for any two objects, the gravitational force between two objects is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. So that is universal law of gravitation. F is proportional to m1 m2 by r square. So we can write F is equal to g m1 m2 by r square. अब इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किसी भी प्लैनेट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी दो प्लैनेट्स के बीच का, एक प्लैनेट एक स्टार का, एक प्लैनेट एक मून का, किसी भी दो मासेस का, उन दोनों के बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा ये ऐसा ही आएगा, m1 m2 by r square. इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल, इट इज द सेम एनीवेयर इन द यूनिवर्स, राइट? ओके, सो नाउ ये जो g आया है, हमको g के डायमेंशंस चाहिए, हमको g के यूनिट्स चाहिए, हमको g की वैल्यू चाहिए. तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. तो g के डायमेंशन अगर चाहिए होंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ एफ आर स्क्वायर m1 m2. वी ऑलरेडी नो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t माइनस 2, r इज डिस्टेंस तो l2, m1 m2 मास है तो m रेज टू 2. तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2. तो m माइनस 1 l3 एंड t माइनस 2 these are dimensions of g. तो यहाँ से आपको यूनिट्स भी मिल जाएगा, इजी है. यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर. सो these are the dimensions, units of g. अदरवाइज ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो. यहाँ से फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा भी चलेगा. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर भी चलेगा, राइट? गुड. देन आई होप कि इतना समझा है. लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज नाउ, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने तो अभी सिर्फ एक जनरल फॉर्म दिया है, दैट इज अ स्केलर फॉर्म, दैट फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस. बाय द वे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लिखना होगा तो बहुत इजी है.
every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. That's it. Okay, so it is very easy to state also. Now we would like to write force between two masses in vector form. सबसे पहले what I will do is we will take a coordinate system z, x, y. So we have this x, y, z axis here, x, y, z, right? Then we have a point mass over here. वन पॉइंट मास हो या फिर जस्ट मास है m2. ओके, तो ये जो m1 है इसका जो रेडियस या फिर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, नॉट रेडियस बट पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर आप हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करते हो, राइट? दिस पोजीशन वेक्टर इज r1 बार. सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज r2 बार. So you have this as r2 bar, right? So position of mass 2 with respect to mass 1 is given by this particular vector. Position of 2 with respect to 1, r21 bar, right? Easy. And some people get really confused. तो मैं आपको का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं अब, क्योंकि ये वेक्टर्स का बेसिक है. तो आपको वेक्टर का बेसिक पता होना चाहिए अंडर एनी कंडीशन. लेट मी गिव सम नेम्स. लेट अस से ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, राइट? ओके, देन व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम ट्रायंगल लॉ. OA बार प्लस AB बार इज इक्वल टू OB बार. जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ A पॉइंट पे, वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर and ends at the head of second vector, right? तो ये ट्राइंगल लॉ है. तो ए बी बार क्या मिल गया? ओ ए बार, सॉरी, ओ बी बार माइनस ओ ए बार. ओ बी बार क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 मतलब r2 बार. ओ ए क्या है? r1 बार. ए बी बार क्या है? a से b मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन a एंड b. तो r21 बार क्या मिल गया आपको? r2 माइनस r1, राइट? तो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स. इट इज वेरी वेरी बेसिक. आपको ये पता होना चाहिए. आगे से आगे बहुत काम में आने वाला है. सो वी डोंट नीड टू राइट डाउन इन डिटेल फॉर ग्रेविटेशन, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, राइट? तो हमारे पास अब क्या है? हमारे पास दो मासेस हैं समवेयर इन स्पेस. हमने ओरिजिन कहीं और सेट करके रखा है, हमने ओरिजिन यहां सेट करके रखा है. ऐसा क्यों किया हमने? थिंक ऑफ टू स्टार्स. हम लोग अर्थ पे बैठ के दो स्टार को देख रहे हैं. अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं मतलब अर्थ से पहले स्टार का पोजीशन होगा r1, तो अर्थ इज एट ओरिजिन, एंड दूसरे स्टार का पोजीशन होगा r2 बार, राइट? करेक्ट. तो वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अर्थ टू स्टार्स और हमको उन दोनों स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है. तो दैट इज व्हाई नॉर्मली व्हेन टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन हम लोग ओरिजिन कहीं और सेट कर देते हैं, क्योंकि कहीं और से ही देख रहे हैं ना हम लोग. अर्थ पे बैठ के स्टार्स को देखते हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट. सो ओरिजिन इज समवेयर एल्स, राइट? इट शुड बी वेरी क्लियर व्हाई ओरिजिन वी हैव सेट ऑन. क्योंकि मैं ऐसा कर सकता था ना, मैं बोल सकता था मैं m1 पे ओरिजिन सेट कर दूंगा, मेरी मर्जी. कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी सेट कर दूं, राइट? यस, दैट यू कैन डू. बट नॉर्मली हम लोग तो अर्थ पे बैठे हैं, हम यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, तो ठीक है, गुड. ओके, देन what we want to know is
हमको ये देखना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। फोर्स F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो दैट इज इन जनरल G m1 m2 by r square, where r is nothing but mod of r12 and mod of r21। अभी r12 और r21 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्यों? क्योंकि r21 बार क्या है आपका, r21 बार क्या है आपका, यू शुड नो, इट इज फ्रॉम 1 to 2, और r12 बार क्या आएगा, फ्रॉम 2 to 1। ये इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बताऊंगा सब, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। नाउ इट्स नाउ और नेवर। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स कहां लग रहा है, दो पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, वन लगा रहा है, राइट। फोर्स F2, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, करेक्ट। तो क्या आना चाहिए, इट शुड बी R21 कैप, करेक्ट। F21 बार इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर R21 कैप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? ये इसलिए रॉन्ग क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो आप बराबर बोलते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज 1 पॉजिटिव था, चार्ज 2 पॉजिटिव था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेकंड पे फोर्स लगेगा 1 लगाएगा तो इट इज ऑलवेज अवे, रिपल्सिव फोर्स था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे। इसलिए आप लिखते थे, इफ यू रिमेंबर, k q1 q2 by r square r21 कैप, है ना, मैंने बताया भी था ये याद रखने का मेथड। फोर्स रिपल्सिव था इसके लिए, बट रिमेंबर वी आर इन द डोमेन ऑफ, वी आर लर्निंग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। फोर्स ऑन टू, कहां फोर्स लगा, सेकेंड मास पे। किसने लगाया, पहले ने लगाया। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड पे जो फोर्स लग रहा है, जो पहला ऑब्जेक्ट सेकेंड पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव है, खुद के पास खींचेगा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विल बी टूवर्ड्स वन, राइट। तो इट विल बी R12 कैप, या फिर आप लिख सकते हो R21 कैप विद अ नेगेटिव साइन। आपके ऊपर है आप कैसा लिखना चाहते हो, राइट। सिंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव, इसके लिए, राइट। सिमिलरली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, फोर्सेस आर ऑलवेज इन कपल, एक्शन रिएक्शन। अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट पे पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो पहले ऑब्जेक्ट पे सेकेंड भी लगा रहा है। अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो G m1 m2 by r square minus r12 कैप, राइट, करेक्ट। बट r12 कैप इज नेगेटिव ऑफ r21 कैप, इसलिए मैं लिख सकता हूं F12 बार इज G m1 m2 by r square r21 कैप। मतलब मैं लिख सकता हूं F12 बार इज, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस एडजस्ट कर दिया सिर्फ, मतलब नेगेटिव ऑफ F21 बार। मतलब द फोर्स exerted on 1 due to 2 is equal in magnitude but opposite in direction of the force exerted by 2 on 1। force exerted by force on 1 due to 2 is equal to minus of force on 2 due to 1। Simple, very simple, right? Good. Last thing that we will learn now, and we will make notes and revise again। ये तो हो गया दो masses का, but if you think on a larger scale, हमारा सोलर सिस्टम का ही बात कर लो। Do we have only two masses? हमारे सोलर सिस्टम में क्या सिर्फ अर्थ और मून है? There is sun, parent of our solar system, father of our solar system, sun,
Then you have Mercury, you have Venus, you have Earth और उसका moon, you have Mars and two moons. Then you have asteroid belt, failed planet जो कभी planet बन सकता था बना ही नहीं. Then you have Jupiter and many moons, right? So what I am trying to say is if I have so many masses, right? Mass m1, m2, m3, m4, m5. So if I want to know what is the total mass, total force on mass m1, I can make use of superposition principle of forces. याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था. मैं इसलिए बोलता हूं that it is important to study gravitation and electrostatics hand in hand, एक के बाद एक या साथ में कंपेयर करते चलो, राइट? So I want to know what is total force on one. So total force on one due to all other masses will be force on one due to two, plus force on one due to three, plus force on one due to four, and so on. जितने होंगे उतने. So in general, force on any mass denoted by I, क्योंकि हो सकता है ना force on second object find करना है, third find करना है, fourth find करना है. So I will write summation of Fij, जैसे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मतलब आई, तो वन वन वन, है ना? आई बना दिया उसको मैंने आई. क्या है ये? एफ आई जे, राइट? जे मतलब 2 3 4 5 6, ऐसा मतलब जे की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू एन, राइट? बट एक कंडीशन है. ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? F11 F22 नहीं दिख रहा है ना, मतलब आई एंड जे कैन नॉट बी इक्वल. मैं समझाता हूं वापस से ये. We'll go into details of it again. तो the question under study was, हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे मासेस हैं हमारे पास. हमको देखना है कि एक पर्टिकुलर मास पे, लेट्स से m1 पे टोटल फोर्स कितना है. तो टोटल फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, प्लस जितने होंगे उतने फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. इसका मतलब वन और टू एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं, बाकी को निग्लेक्ट कर देते हैं. तुम हो नहीं हो डजंट मैटर. फिर बाद में वन ने देखा अरे थर्ड ऑब्जेक्ट भी है, वो भी फोर्स लगाएगा, मैं भी फोर्स लगा देता हूँ. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड. तो व्हेन वन एंड थ्री आर इंटरएक्टिंग, व्हेन देयर इज फोर्स बिटवीन वन एंड थ्री, बाकी सबको निग्लेक्ट कर देते हैं. वो वी डोंट केयर, चौथा भी बैठा है, पांचवा है. So this is how it works. So you have to consider only forces between two masses, neglecting the presence of other. फिर अगले पे जाओ, फोर्स वन टू हो गया, फोर्स वन थ्री, फोर्स वन फोर एंड सो ऑन. बट अभी अगर मेरे पास 1000 मासेस है तो मैं क्या लिखता रहूंगा? वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, नहीं चलेगा. तो वी हैव टू यूज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, इन जनरल आई बोल देता हूं मैं. तो इसको कैसे लिखेंगे? समेशन, किस पे समेशन कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं समेशन बेसिकली, वो लिखेंगे आगे, बट इट इज एफ आई जे, फोर्स बिटवीन आई एंड जे. जे की वैल्यू मैं चेंज करता हूं, इसलिए मैं लिखता हूं जे की वैल्यू वन से लेके एन तक. जैसे फोर्स ऑन टू इज एफ टू आई, एफ टू, अच्छा एफ टू वन. गड़बड़ हो जाएगी ये तो फिर, क्योंकि ये देखो पेयर कैसे बनेंगे, पेयर कैसे बनते हैं, पेयर ऐसा बनते हैं एफ वन टू, एफ वन थ्री, एफ वन फोर, एफ वन वन नहीं आना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे इसके समेशन के नीचे लिखते हैं कि आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए. करेक्ट? अगर ऐसा नहीं समझा तो फिर आप एक अदर मेथड यूज कर सकते हो. तो यू कैन आल्सो से ऑल पेयर्स. पेयर्स तो पेयर से पता है ना, वन टू, वन थ्री, वन फोर, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ऐसा ऑल पेयर्स, राइट?
So this is principle of superposition of forces in gravitation, right? So sufficient. We will now write down things and revise again. बहुत simple सा topic और interesting topic है. So you need to just calm yourself, आराम से समझो, सोचो और लिखो. Right. So we'll revise everything and we'll draw a diagram wherever required. Okay. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? We started off by talking about the study that Newton did for the motion of moon around earth. तो वहीं से स्टार्ट करेंगे. So let's say in year, आपको ईयर वियर लिखने की जरूरत नहीं होती है. I'm just telling you, but it's okay. So Newton studied the motion of the moon around the earth, right? It was known that the period of revolution of moon is 3.85 into 10 power 5 किलोमीटर. ये कैप मतलब रेज टू 5 होता है. ओके. एंड ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, ये है डिस्टेंस. So it was known that the period of revolution of moon around earth is 27.3 days. Is 27.3 days, and the distance between, मैं ये वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, between centers of earth and moon is, कोई बुक्स लिखे नहीं लिखे, I like to do it because it's important, right? Okay. Up. Since the motion of the moon around the earth is circular, and therefore the force is centripetal. Hence, the force between them is centripetal force. Right. So I can write F is equal to m r omega square. Right. So I will say Rm because it's the distance between moon and earth. So this is equal to F equal to m Rm. Omega is 2 pi by time period, 2 pi n, and n is, you know what is n, right? Okay, but F in general is mass into acceleration, और acceleration जिसका moon की बात चल रही है. Therefore, from equation number 1 and 2, what we can write is
Therefore, from 1 and 2, what we can write is m into am is equal to m rm 2 pi by t square mm cancel. तो am is equal to rm की वैल्यू हमारे पास है 3.85 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स, मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, राइट. एंड 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इज 27.3 डेज. हर एक डे में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स, हर एक में 60 सेकेंड्स. तो लिख दो, सिंस वी ऑलरेडी नो आर एम इज 3.85 into 10 power 8 meter and time period of revolution is 27.3 into 24 into 60 into 60 seconds. So solving this, you will have am is equal to 0.027 meter per second square, right? तो आपको इतना कम से कम पता है. Let's assume that you know this, right? Now what we also know is, we know that for an object on the surface of earth, acceleration is given by, acceleration is, so a of object is 9.8 meter per second square, right? So Newton actually compared these two values. Newton compared these two values of acceleration. तो आपको मिलेगा a object upon a moon is equal to 9.8 upon 0.027, that is 3600. Also, distance of moon from earth, distance of moon from earth center, from earth's center divided by distance of object on the surface of earth from earth center, from earth's center. तो ये जो डिस्टेंस है, सॉरी फॉर दिस, ये जो डिस्टेंस है, that's denoted by rm upon r object, that is equal to 3.85 into 10 power 3.85 into 10 power 5 kilometer upon 6378 kilometer, right? So this turns out to be 60. Since our object is our radius of earth, that is 6378 किलोमीटर. क्योंकि अगर आप भी बैठे हो तो आप अर्थ के सरफेस पे, मतलब आपका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ ही है बेसिकली, राइट? सो therefore what we can see is, therefore acceleration of object upon acceleration of moon is equal to 3600, which is equal to 60 square, which is equal to r moon, distance of moon and earth upon
r object का square, right? So therefore what Newton concluded that acceleration of object towards earth is inversely proportional to the square of the distance of object from the center of earth. Therefore Newton concluded that the acceleration of an object towards earth is inversely proportional to is inversely proportional to the square of distance of object from earth's center. Therefore a is inversely proportional to 1 by r square, right? So next thing is, sorry, just a minute. Yep, crashed. 11th physics, grav 3. Okay, very good. So we have lost a little bit of data, right? So I have to repeat little bit. सिर्फ जो हमने कंक्लूजन लिखा था वो रिपीट करना पड़ेगा. Anyway, so Newton concluded that the acceleration of an object towards the earth's center, towards the earth basically, is inversely proportional is inversely proportional to the square of distance of object from the earth's center, from earth's center. Therefore what you have is a is proportional to 1 by r square. Now we will need this diagram, so I need to just have a new page, right? So what we know is, as force is proportional to, or force is equal to mass into acceleration, therefore the force exerted by the earth on the object of mass small m, by the earth on an object of mass small m is, and distance बताना पड़ेगा हमको, at a distance r is given by f is proportional to m by r square. Okay, right? Similarly force on earth due to object is
F is proportional to m by r square, and therefore in general, what we can write down, therefore in general, we can say F is proportional to m small m by r square. ओके, तो यहाँ पे हम लोग आके अब ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे सकते हैं. सो लेट्स स्टेट ऑफिशियली व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो as you can see from above equation, you can say every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. So every particle of matter attracts every other particle of matter. मतलब जहां भी मास होगा, इन शॉर्ट बोलने का मतलब वो है. So every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. Correct. So if you want to write in general, you can talk about if you have two bodies separated by a distance r. So if two bodies of masses m1 and m2 are separated by distance r, then gravitational force will be given by, just a minute, okay, right. So then F is proportional to m1 m2 by r square. Therefore F is equal to g m1 m2 by r square, where g, it is universal gravitational constant. Universal gravitational constant, and the value of g is, you should know this value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square, because आपको यूनिट्स बताए मैंने. And dimensions of g are, dimensions of g are easy है. Dimensions of g will come from dimensions of force into r square divided by dimensions of m1 into m2, and that is, after solving you will get m minus 1, t minus 2 and L3. Okay, so we'll stop here and we will see what is vector form and what is principle of superposition again in the next lecture. We will revise and write down in the next lecture.